गाइस आई एम श्योर आप लोगों ने कबीर सिंह मूवी का ये सीन ज़रूर देखा होगा। Section 337 of the IPC, causing hurt by act endangering life or personal safety of others. Whoever causes hurt to any person by doing act so rashly or negligently as to endanger human life or the personal safety of others. लेट मी एक्सप्लेन। सो गाइस, जो मूवी सीन में मेडिकल नेग्लिजेंस की बात हुई है, एक्चुअली में होता क्या है? सो नेग्लिजेंस इज द फेलियर टू एक्सरसाइज दैट डिग्री ऑफ केयर एंड स्किल विच अ रीजनेबली प्रूडेंट पर्सन वुड एक्सरसाइज इन सिमिलर सर्कमस्टांसेस। अगर सिंपल भाषा में बोलूँ तो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में जितनी रीजनेबल केयर एंड स्किल एक प्रूडेंट पर्सन से एक्सपेक्टेड होती है, अगर उस केयर नहीं ली गई और उसके रिजल्ट में पेशेंट को हार्म हुआ तो उसे हम नेग्लिजेंस कह सकते हैं। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नेग्लिजेंस: सिविल नेग्लिजेंस, क्रिमिनल नेग्लिजेंस एंड प्रोफेशनल नेग्लिजेंस। सिविल नेग्लिजेंस में क्या होता है कि देयर इज अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी ऑफ केयर विच कॉजेज सिविल रॉन्ग। एग्जाम्पल लेते हैं, इफ अ सर्जन लीव स्पॉन्ज इन द एब्डोमेन तो उससे पेशेंट वुड सफर कॉम्प्लिकेशन। इन रिजल्ट पेशेंट कैन आस्क फॉर कॉम्पनसेशन, बट दिस इज टाइप ऑफ ऑर्डिनरी नेग्लिजेंस जिसमें पेशेंट कैन आस्क फॉर कॉम्पनसेशन। नाउ वी विल कम टू क्रिमिनल नेग्लिजेंस। इट इज़ अ रैश और ग्रॉसली नेग्लिजेंट एक्ट विच एंडेंजर्स ह्यूमन लाइफ। इसमें एग्जाम्पल है कि डॉक्टर गिव्स ग्रॉसली रॉन्ग डोज ऑफ ड्रग विदाउट चेकिंग बेसिक प्रिकॉशंस। इन दिस पेशेंट इज डेड। So this is a higher or gross degree of negligence as compared to civil negligence. Now we come to professional negligence. It is the failure to exercise reasonable skill and care expected from a competent professional. Professional standard of care इसमें maintain करना जरूरी है. For example, doctor does not follow accepted standard of care during treatment and the patient is harmed. इसमें consequence हो सकता है कि there is disciplinary action taken against the professional and there is also civil liability in some serious cases. And criminal negligence में there can be imprisonment or fine. So now we will discuss about the related BNSs under negligence. First, what is BNS? BNS is Bharatiya Nyaya Sanhita. It is the principal criminal law of India. Before it was IPC and now it has replaced with BNS. Now there are 2 types of BNSs, 106 BNS and 125 BNS. 106 BNS is causing death by negligence. There is the rash or negligent act which causes death but not amounting to culpable homicide. This means that it is not a willful act, it is just the negligence which is happening. There is punishment of 5 years of imprisonment or fine or both. For registered medical practitioner, there is 2 years of imprisonment and fine. Under 125 BNS, it is act endangering life or personal safety of others. This is what has been there in the movie, endangering life. It is divided into 125A and 125B. 125A is hurt. It is the act which causes hurt. For example, doctor negligently inserts IV cannula without proper asepsis, and उसकी वजह से patient को local infection हुआ and there is swelling, which is a simple hurt. Punishment given is up to 6 months of imprisonment or fine up to 5,000 or both can be given. In 125B, it is grievous hurt. ठीक है. Now, example is doctor's negligent handling of fracture leads to nerve injury, which causes permanent loss of movement. Here, grievous hurt is taking place, which is the permanent loss of movement. And the punishment given is 3 years of imprisonment or fine of 10,000 or both. Quick memory पे जाते हैं. Death, you can learn it by section 106. You can learn by death, 125 by hurt, and 125B by grievous hurt. So yeah.